Let me just go through it. A carpentry company wants to add 2 new products in its range, a particular size door, which is named as product 1, and a particular size window, which is product 2. These products are required to be processed in 3 sections. So section 1, 2, 3. Details of production time taken by each product in each section and total balance production hours available in the 3 sections are as follows. So आपके पास में you are aware of the production time which is available to you. Okay, per week and profit per product. This is what has been provided. So details of the production time taken by each product in each section and total balance production hours available in the 3 sections are as follows. So our objective is to what? Find the optimum quantities of products 1 and 2. Fine. So यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो आपके पास में हर एक सेक्शन वाइज दिया हुआ है. फाइन. What would be your objective? Decision variable would be how many units of A हम इसको चाहिए तो P1 और इसको P2 ले लेंगे. So P1 is number of product 1 to be made and P2 would be number of product 2 to be made. बराबर? Fine up to this? Yes, sir. After Yes, this, my formulation. Formulation में सबसे पहला is objective function. Objective would be to maximize profit and my equation would be Z equals to P1 plus 5 P2. Correct, na? Any doubts? No, sir. Okay. My constraints would be first, that would be pertaining to section 1. इसी तरह से we will have for section 2 section 1, 2 and 3. So section 1 के लिए जो है that is क्या आएगा? Production time available है. So that means P1 has to be less than or equal to 4. 2 should be less than or equal to 12. And section 3 P1 3 into P1 plus 5 into P2 should be less than or equal to 18. Correct? And last is the non-negativity constraints. जब भी आप लिख रहे हो that time you have to write it completely. Okay, so
non-negativity constraints. So that means P1 comma P2 has to be greater than or equal to 0. Are we okay up to this? Sir, in section 2, it should be P2 is less than equals to 12, no? Sorry, मैं बोला वही but इधर गड़बड़ कर दिया. It has to be less than equal to 12. Thank you. I typed it wrong. P1 should be less than or equal to 4, P2 should be less than or equal to 12, and third is 3P1 plus 5P2 should be less than or equal to 18. इतना तक ओके है? Yes, sir. चलो अभी इस हिसाब से we'll just start putting up our graph. So P1 less than or equal to 4 का मतलब ये हो गया कि आपका एक सेकेंड will say P1, P2 पहला हम ये ले लेते हैं से So P1 के लिए 1 हो गया, ये 0 हो गया and this would be 4. Fine. Now अपना since it is P1 equals to 4, so under all circumstances it would be 4 and we can have P2 as 0. Second हम लोग 4 ले लेते हैं. Fine. So we have got this equation. Now the second one वो भी ठीक इसी तरह से हम कर लेंगे. So we'll just copy and paste it here. इसको नीचे ले लेते हैं because we'll be drawing it there. Now in this case it is P1 is 0, P2 is 1 and here it is P2 is less than or equal to 12. So that means P2 equals to 12 वाला हिसाब all the time रहेगा and we can have values equals to 0 and we can have any value. So चाहे तो 12 ले लो कोई दिक्कत नहीं है. Fine. Now coming to the third one. 3P1 plus yes. Sir, it would be 0 and 2, right? For P2 equal to less than equal to 12. When we say P2 less than or equal to 12, that means P2 equals to 12 का लाइन हम ड्रॉ करेंगे और उसका जो लोअर रीजन है हम उसको कवर करेंगे. So when I say P2 equals to 12, so that means the value of P2 will always remain as 12 irrespective of the value of P1. Means Sir, but question एक it doubt was 0 and 2. So Sorry. In question for product 1 and 2 for second section it was 0 and 2. So would the equation be 2P2 is less than equal to 12 or just? नहीं 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 नहीं. देखिए यहाँ पर it was P1 equals to 4. So इसके लिए मैंने P1 I have taken always equals to 4. यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो. Any value for P2 because सर वो कुछ ऐसा रहता है ना हिसाब कि it should be greater than the number, right? वही है ना, सेम लगाना ना मेरे को. हाँ नॉर्मली कैसे है आपको वो बाद में इधर पर थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा इसको क्योंकि अभी देखिए यहाँ पर P2 में अगर 12 तक जा रहा है तो मुझे इसको भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ताकि वो लाइन वहां तक आ सके. सो मैंने अभी के लिए जब सबसे पहले मैं कर रहा था तो मुझे मालूम नहीं आगे पॉइंट्स कितने कितने तक आएंगे. सो मैंने उसको 4 रखा था बट वी कैन इंक्रीज इट डिपेंडिंग अपॉन ऑल द अदर वैल्यूज. ओके. Sir, Yes. so the production time for product 2 in section 2 is 2. So it has to be 2P2 less than equal to 12, right? हाँ यहाँ पर इट इज 2P2. सॉरी तो मेरा इक्वेशन भी पूरा बदल जाएगा. 2P2 less than or equal to 12
ठीक है, सो एक तरह से देखा जाए तो P2 इज लेस देन और इक्वल टू 6. सो आप इसको उसी हिसाब से रखिए, चाहिए तो स्टिल 2P2 इक्वल्स टू 12. अच्छा ये आप बता रहे थे, सॉरी 2P2 कौन कौन बोल रहा था? There was somebody who was So it was Suyog. Suyog. Thank you, Suyog. Yes, sir. ओके, सो यहाँ पर आप इस तरह से ले, सो अब अगर मैं इस हिसाब से चलूंगा, सो माई P2 वैल्यू विल बी हाउ मच? करेक्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ हम कितना भी ले रहे हैं. ठीक है, सो माई P2 वुड बी इक्वल्स टू 6. अभी बराबर है? Yes, sir. Thank you. So now when I say P1 equals to 0, my P2 would be equals to 18 divided by 5, and when my P2 is 0, that time it will be equal to 18 divided by, correct? Fine ना? ये values कैसे आ रही हैं? Yes, sir. So sorry to interrupt you once again. Yes. Actually, it is 2P2, 3P1 plus 2P2. This one? Yes, Sir, sir. equation 2, sir. 3P1 plus 2P2, right? हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम है Sir, आज like मेरे आपने उधर भी चेंज नहीं किया है. Like in the second equation also we have written P2 in A17. कहाँ पर? हाँ, A17. यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा. Yes, sir. करेक्ट. तो प्रॉब्लम है भाई आज मेरे साथ, committing mistake one after another, but I'm happy still. Guess why? Why am I still happy? Sir, because we are participating. Because there is somebody to correct me. लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि गलतियां तो सबसे होती हैं, बट जिनको उनकी गलती बताने वाला कोई भी ना हो ना, सबसे ज्यादा बैड लक उन्हीं का होता है, क्योंकि वो करेक्ट नहीं कर सकते. और जब एक टीचर के स्टूडेंट्स टीचर को बताएं कि आपने ये यहाँ पर गलत कर दिया, so that says now they are following it, which is more important. लाइफ में हमेशा याद रखना, जो आदमी आपकी गलतियां आपको बताता है वही आपका ट्रू फ्रेंड है. कई बार हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं एंड वी डोंट लाइक इट, बट रियलिटी तो ये है कि वो हमारी गलती होती है जब हम नहीं पसंद करते हैं वो चीज. साथ में यूएचवी सेशन भी हो गया. फाइन, आपका ग्राफ बराबर आ रहा है? So I'll just edit this and I will ensure that it
gives me the right names for my graph, and I will add the other two. So this is my series X values and then the Y values. Say okay. I'll add the third one. So this is my series X values, Y values. I say okay. Let us look at the regions that we are referring to. When P1 less than or equal to 4, that means we are referring to this region. When I say 2P2 less than or equal to 12, that means I am referring to this region. So this becomes my common region. Okay, and when I have this third equation, 3P1 plus 2P2 less than or equal to 18. Okay, so that means I am referring to this region. Okay, so that says my common region is correct. Have I identified the region correctly? Hello? Yes, sir. Okay. So my So using can you X. show the select data wala option one? Okay. So क्योंकि Okay. P1 is greater than equal to 4 वो मेरा less आया, that's why I wanted to see. Go to design. P1 less than or equal to 4. I'll just edit it. So this one is referring to this value, whereas X values are referring to this and Y values are referring to this. ठीक है? Yeah. अभी इसमें देखिए आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पर तक गया है, मैंने उसको सिर्फ 6 तक लिया है, बट इसकी वजह से आई कैन सी मैं इसको 9 तक लूंगा तो यहाँ पर तक दिखेगा. समझा ना? सो इंस्टेड ऑफ 6 आई कुड हैव मेड इट टिल 9. और इसको अगर 9 करता था तो वो ग्राफ आपका थोड़ा ऊपर तक ऐसे दिखता था. Fine. So now using extreme points method, what are my points? First is 0, 0. Correct? P1 is on the x-axis and P2 is on the y-axis. Second point, so that means मेरा एक 0 हो गया, दूसरा भी 0 हो गया. Fine. Let me just pull these things down and I will mention it as point. Here I say P1 value, here I say P2 value, and this would be profit. Now since we are talking about profit, हमारा इस direction में move करना चाहिए. So my profit is equals to 3 into 0 plus 5 into, so profit at this point is 0, 0. Let me look at the second point. यहाँ पर मैं जाता हूँ तो it is 0,6. So 0,6. So means P1 is 0, P2 is 6. So that gives me the profit of 30. What about this point? It is 2,6. So 2,6 gives me 2, 6. And it is 36 total profit.
What about this point? It is 4, 3. So 4, 3, 4, 3, and my profit has 27. It has reduced. What about this point? 4, 0. So 4, 0. It would be definitely even lesser. So 4, 0. Automatically उसने ले लिया. Fine. So maximum profit is at this juncture. So that means this becomes my clear. Yes, sir. अब आपको आइसो प्रॉफिट लाइन मेथड से करना है करो, नहीं तो भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा. It's not necessary. Only for this sum or other sums also? For any sum. You Okay. have to use any one method. Okay. Until and unless specified. अगर आपको specifically बोला जा रहा है that you are supposed to use both the methods or you are supposed to use only iso profit line method, so then you have to do it according to that only. But if nothing has been indicated, so it is your call. So even you can go ahead and solve it using solver. Okay. Are we clear? Yes. Yes, sir. अब इसी को अगर मुझे सॉल्वर से सॉल्व करना है, so how am I going to do it? ये पूरा का पूरा मैं लेकर के I can do it very easily using solver. Let us say I am putting it here and I will solve it on this side. So ये मेरे पास में अवेलेबल है. So I will put the inequality sign here. Okay, this is my P1, this is my P2. These are the sections 1, 2, 3. This is profit. Now production time available. Fine, and this would be production time used. So जो भी आपका production time used रहेगा, that has to be less than or equal to, correct ना? So how will I identify my production time? Equal. अभी इसमें मुझे एक और चीज चाहिए, that is number of units produced. If I say number of units produced, this becomes my decision variable. Okay, so P1 and P2. Fine. So my production time used will be equal to some product of this comma this, because that's my decision variable. Profit भी ठीक उसी तरह से आ जाएगा. Let me just एक second इसको freeze कर देते हैं, because I am going to use it again and again. Fine. So if I just drag it till this point, I'll be able to get the profits also. So this profit becomes my objective function.
And what about this? This tells me how many units of how much time have I invested in section 1. Okay, this will tell me how much time I have invested in section 2. अब इसमें 1 डाल के देखते हैं तो अपने को श्योर हो जाएगा. So करेक्ट. अब इसको 1 की जगह पर अगर मैं P2 में 2 भी डालूं तो भी क्या होगा? सेक्शन 1 में कितना टाइम जा रहा है? इट इज ओनली जस्ट डिपेंडिंग अपॉन P1. उसी हिसाब से वो काम कर रहा है. सो द वे आई हैव फॉर्मुलेटेड इज परफेक्टली राइट. ठीक. यहाँ पर अगर P2 की बात कर रहा हूँ तो P2 में चेंज हो रहा है. P1 में इधर पर 0 है तो भी स्टिल उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. इट इज स्टिल maintaining it. 1 into 0 is 0, 2 into 2 is 4. Fine. Is it okay? Yes, sir. My Yes. inequality signs are less than, equal to, less than, equal to, less than, equal to. Perfect. This becomes my objective function. So अभी सबको सेंटर लाइन कर देते हैं so that we are able to see them clearly. I have selected this and now I go for solving it using solver. So this is my सर एक objective बार सम function. प्रोडक्ट दिखा सकते हो आप क्या लिया है? हाँ. ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इधर पर है. इवन बाकियों के लिए भी सेम है. आई हैव फ्रीज्ड दिस वन because this talks about my number of units of P1 and P2. So O8 to P8 I have freezed it and O7 P7 is what would be changing for section 1, section 2, section 3 as well as for profit. ओके. Fine. और अगर आपको ऐसे सारे फॉर्मूला इज पॉसिबल. कैन यू सी इट? ठीक है. Yes. So now all I have to do is just go to solver, select this as your objective function since it's profit, so we'll try to maximize it. Changing variable cells, that means these are the two values which we would like to change. Constraints are to be added. अभी सबसे अच्छी बात क्या है कि सब कुछ मैंने सबका सेम ही inequality sign है, so I can just simply select all the three at one go less than or equal to these values. So I don't need to add them individually one after another. I can just do them at one go only. And I say OK. Now just ensure that this is tick marked. Select Simplex LP and just say solve. 2,6. This is the same solution that we have got using extreme point method also. So इसमें आपको ग्राफ वगैरह कुछ भी प्लॉट करने का जरूरत नहीं है. Immediately you can get the solution. Fine. Yes, sir. ये with this we are through with it.
Mr. Singh's objective is to maximize the quantity of coal sent to Bhelpur. इसमें मेन ये सब थोड़ा सा ज्ञान दिया हुआ है. It is true that profit is not literally related to sales volume but total contribution. ये ज्ञान थोड़ा important ज्ञान है. और जब आप इंडस्ट्री में काम करना शुरू करोगे, स्पेशली व्हेन यू आर इवैल्यूएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन में क्या फर्क है. ठीक है. एंड व्हेन वी लुक एट कंट्रीब्यूशन, इट इज मोर क्रूशियल एज कंपेयर टू प्रॉफिट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अगर आपने अच्छे से मैनेज कर दिया तो प्रॉफिट अपने आप काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है. Okay, I hope you know what do we mean by contribution. Yes. ठीक है. So if you understand that, okay, do you understand the difference between a profit and a contribution? आप लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग किया है? Yes, sir. बस वो कंसेप्ट को दिमाग में रखिए. इट इज नॉट अबाउट फाइनेंस. ओके, अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. तो हर एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा प्रॉफिट्स होता है. अब उसमें प्रॉफिट्स के साथ में ग्रोथ होता है. ओके, रादर more than the profits, it's about contribution. That basically talks about the efficiency of the business. Okay, so there must be alternate courses of action, one of which will achieve the objective. One of these alternatives must provide the best solution. In Mr. Singh's case, a choice has to be made whether to send type A or type B vehicles or employ them in a mix. In Mr. Singh's case, only 4,000 liters of diesel and 30 drivers are available. Mr. Singh's problem is to ensure sending maximum coal to Bhelpur. The other information related to Mr. Singh's case are as summarized below. So आपको summary form में already दिया हुआ है. Type A vehicle, Type B vehicle and the total resource availability. When we look at the carrying capacity of Type A vehicle is 2 tons, whereas for type B vehicles it's 3 tons. ठीक है. So डीजल रिक्वायर्ड में देखेंगे तो 100 लीटर डीजल लगता है पर ट्रिप बोल सकते हो आप, क्योंकि ये पर ट्रिप कैपेसिटी दी हुई है. सो पर ट्रिप दे नीड 100 लीटर्स ऑफ फ्यूल डीजल टू ट्रांसफर दिस मच टन ऑफ कोल. Whereas the type B vehicle, which is a higher capacity vehicle, requires 200 liters for 3 tons of load to be transferred from point A to point B. ठीक है. Total diesel that is available to you is 4,000 liters per day. Drivers required are 1 for type A, 1 for type B, and total drivers which is available to you is 30. This very clearly says that पहला assumption ये है कि ये जो 30 drivers हैं वो type A vehicle भी चला सकते हैं, at the same time they can drive type B vehicle also. Now the number of type A vehicles which are available with you is 26, whereas number of type B vehicles which are available with you is 15. So what should be the best? Should he go for a combination? Should he use only type A vehicles or should he use only type B vehicles? Okay, what is a better choice? Okay, so हम क्या करेंगे? We will just work it out and we'll get into analytical mode now.
So that we have only just numbers here, तो हम कुछ चीजों को यहाँ पर ही डाल देते हैं. So it would be easy for us to, here it would be only just 2, 3, nothing. Diesel required, we'll put it in liters. So here we will have only 100. Here we will have only 200. Here it would be only 4,000. 130 number of vehicles available or other. Fine. Are we okay up to this? Information बस सिर्फ अपने पास है. Now we have to decide कि क्या करना है. How do you propose to go about it? अपने को ग्राफिकल मेथड आता है तो ग्राफिकल मेथड से हम शुरू कर सकते हैं, करेक्ट? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, do you have any idea? Any suggestions? How should I go about this problem? Sir, would it be to maximize 2a plus 3b equation? Very good. Who said that? Suyog. Suyog. Yes. Very good, Suyog. So, यहाँ पर भी सबसे पहला thing is to identify your objective and decision variable. So सबसे पहला काम होता है हमेशा decision variable. So your decision variable is to identify A and B. A is your, or rather हम यहाँ पर A और B लिख देते हैं. A is your number of type A vehicles to be used. Similarly, B will be number of type B vehicles to be used. Correct ना? उसके बाद में next thing is my objective function. What Suyog said. Objective is to maximize coal transfer. So how much would be my coal transfer? Equals to coal transfer would be 2 into A plus 3 into B. Correct?
So that means I can write it as Z equals to 2 into A plus 3 into B. Perfect यहाँ तक? Yes, sir. Okay. Now, what would be my constraints? What we are working out now is basically formulation. ठीक है? What would be my constraints? First constraint would be diesel. Correct, na? Yes. Second constraint क्या रहेगा? Drivers. और थर्ड क्या रहेगा? Number of vehicles. Correct? Number of vehicles में of type A and of type B. बराबर है इतना तक? So डीजल के लिए मेरा कंस्ट्रेंट वुड बी 100 into A plus 200 into B should be less than or equal to 4000. Please correct me if I'm wrong. Fine up to this? Yes. Yes. Next is A plus B has to be less than or equal to 30. Fine. Now Yes. coming to number of vehicles. So A has to be less than or equal to 26 and B has to be less than or equal to 15. Perfectly fine. Non-negativity constraints A comma B has to be greater than or equal to 0. यहाँ तक बराबर है? Any doubts? No, sir. चलो, good. So अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करने चलेंगे. So let us take up the first. हम डीजल को प्लॉट करते हैं. से डीजल का आपका इक्वेशन क्या है? 100 A plus 200 B less than equal to फिर start from this side. Say I will take A here, B here. So my coefficients for A would be 100, for B it would be 200, and my total RHS value, that is limitation, is 4000. Fine. इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं so that looks good. Now, if A is equal to 0, what would be the value for B? 4000 divided by 200. And when B is equal to 0, the value for A would be 4000 divided by 100. इतना तक ओके है?
Yes, sir. Yes, sir. Let's look at drivers now. A plus B less than or equal to 30. So मेरे पास में 30 ही ड्राइवर हैं. So let me just copy this. It will help me in just doing my things faster. 1 1 and this is 30. Perfect. Let us look at type A and type B vehicles का भी. So here I say type A vehicles. So A is less than equal to 26. So we'll just, when I say A is less than or equal to 26, that means A will always be equal to 26 irrespective of whatever be the value of B. So उसमें एक मान लो मैंने 0 ले लिया, दूसरा जो भी हायर वैल्यूज इस तरफ में B में दिख रही है उस हिसाब से हम ले सकते हैं. ठीक है. So as of now we will take 30. Similarly we will do it for type B vehicles. B less than or equal to 15. So B less than equal to 15 के केस में क्या होगा? सॉरी, यहाँ पर मैंने एक गलती किया. A will be 1, B will always be 0. 0 sir. 0. And this will be 26. Fine. यहाँ पर this will be 15 and B will be 1, whereas A will be 0. 0. And whatever be the value of A, B will always be 15. So A के लिए अभी हम इधर पर जो भी वैल्यूज है उस हिसाब से देख लेंगे. पहला हम 0 डालते हैं. सेकंड विल पुट इट एज हाईएस्ट इज 40. सो लेट्स पुट इट एज 40. Fine up to this? Yes sir. चलो, we will start plotting our graph. So insert, we'll go to scatter plot. As usual वो हमको क्रॉस मार्क करके देता है. This time we need it a bit bigger so that a lot of analysis is required to be done. So ये मेरा पहला वाला आ गया. Let me correct it now. So it is talking about diesel. So let me represent it as diesel. So this is showing me for diesel. When it is saying less than or equal to, that means we are referring to the region between X and Y axis and this line. Fine. Let's add the next one. So my next is drivers. X values would be this and my Y values would be this, and I say okay. Fine. So I have got the second equation also. So now my common region is between X and Y axis and this line and this line. So that means this is my common region now. Let me add the other two. Let's add the type A vehicles. So X would be 26, whereas Y would be 0,30. I say okay. So that means यहाँ पर का जो region में पहले आ रहा था वो cut down हो गया. Now only just this much region. Okay. अभी B का हम डालेंगे तो B भी इधर पर से cut down कर देगा. So B is equal to 15 बोलेंगे तो it will cut it here. So that means this region will be our main region. So let's add B, type B vehicles constraint also. So ये रहा, whereas X values would be below this. So just select कर लीजिए. Y values are these.
say OK. So my common region is this part. इसमें सिर्फ आपको क्लिक करते जाना है. इफ यू चूज दिस ऑप्शन, द बेस्ट पार्ट इज आपको सिर्फ क्लिक करते जाना है एंड इट draws the region for you. So this is my region. इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं so that fine. Okay up to this. Yes, sir. Now what we'll do is we'll identify the points. Okay. So उसके लिए we need नहीं, अभी हम लोगों को हाँ सब पॉइंट इधर के लिए लगेगा. So I need to add my grid lines along the x axis. Y axis की जरूरत नहीं है. So still if we wish to, we can add both. Fine. So this says it is 26 and this is 4. So 26, 4, that is what we'll be getting. So let us identify the points, and according to the points, this is my point. This is value for A, value for B. This is value for coal transferred. Now let us look at also the resources. कौन सा resource कितना बाकी है? Okay, so let us say diesel used लिखते हैं. ठीक है. So डीजल यूज्ड बोलेंगे तो हमारा नेक्स्ट चीज आ जाता है कि कितना डीजल, या तो हम पूरा का पूरा एक तो डीजल हो गया, फिर टाइप ए व्हीकल्स यूज्ड, टाइप बी व्हीकल्स यूज्ड. इसके बाद में और क्या चाहिए अपने को? ड्राइवर्स यूज्ड. ठीक है. हमारे पास में ड्राइवर्स कितने अवेलेबल हैं? 30. टाइप बी व्हीकल्स 15. टाइप ए व्हीकल्स 26. डीजल 4000. करेक्ट. कोल ट्रांसफर्ड, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव. सो ये अपना ये ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज. ठीक है. अभी आपका टाइप ए, टाइप बी. फाइन. सो लेट अस स्टार्ट पुटिंग अप दीज वैल्यूज. सो पहला पॉइंट हमारा है 0,0. करेक्ट. That is, we are referring to this point. Second point is 0,15. So let's look at 0,15. थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिएगा, अभी सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए. फाइन. आफ्टर दैट दिस पॉइंट इज 10,15. So 10,15. This point is 20,10. So 20,10. What about this one? It is 26,4. That's all. So
A it is 0, B is 0, here 0, 15, 10, 15, 20, 10, 26, 4. अब एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छे से फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि हमको सब चीज बराबर से दिखे। Fine. Now, Sir, we how should much is also the? keep, Yes. 26,0, right? 26, sir. 4. We will have one more, that is 26, 0. One more point. Fine. Thank you. अब इसमें हम लोग let us look at the cold transferred. Cold transferred is what? 2A into 3B, correct? 2 tons by type A vehicles and 3 tons by type B vehicles. So हम जितना भी वो करेंगे यूज करेंगे उस हिसाब से 2 into type A plus 3 into type B. So हम इसको extrapolate कर सकते हैं. So this says maximum coal is getting transferred when I am using this. Fine. अभी देखते हैं what is the condition of the resources which are being utilized. So this is actually talking about your first equation, which is 100A into 100A plus 200B, correct? So that means equals to 100. अभी एक काम करता हूँ, let me use these values also, ताकि कल को अगर मुझे कुछ ये values अगर change करने हैं ना तो मैं change करके भी देख सकूं. Okay. So equals to, I will use this as 100, तो मैं इसको freeze कर देता हूं. Okay, into this value A plus 200, I will freeze this also into B. This tells me how much diesel has been used. Since no vehicle has been used, no diesel got used. Now let us look at this. What is happening here is, in this particular case, I am using 3000 liters of diesel. Okay. देखिए आपका 200 into 15, so 3000 liters आपका diesel use हो जाएगा. So here I am using 3000 liters of diesel, whereas in this case my entire diesel is getting used. In this case also all my diesel is getting used. Here still some diesel is left out, here still some diesel is left out. So some things to be observed. Fine. I want you to just observe thing and we'll come to conclusions after this. What about my type A vehicles? So type A vehicle तो मैं ये वाले तो पूरे यूज कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब जो भी type A का वैल्यू है, that same is my type A vehicles getting utilized. What is happening here is I'm able to utilize all my type A vehicles, but in that particular case, my coal transferred is not the maximum. Okay. Now let me look at my type B also. So if I look at it that way, so I'm able to utilize all my type B vehicles in these two particular cases, but my coal transferred is not the maximum. Correct? It is 65, 45. आप ये देखिए कि ये दोनों conditions में you are close to your objective value, but you were not able to achieve it. Okay, let us look at the number of drivers which are getting used. So equals to A, one driver every this thing. So A plus B is my number of drivers used. So
Look at this. Now what is happening here is, in this particular case, two of your resources are getting utilized completely. One is the diesel, the other is drivers. Okay, यहां पर भी आपके दो रिसोर्सेज कंप्लीटली यूटिलाइज हो रहे हैं. यहां पर क्या सीन है? दो रिसोर्सेज आपके कंप्लीटली यूटिलाइज हो रहे हैं. करेक्ट. सो ज्यादातर कंडीशंस में आप देखो या तो एक या तो दो, और जहां कहीं भी आपके दो रिसोर्सेज पूरे के पूरे यूज हो रहे हैं, at those points you will see your objective function is coming more closer to the maximum. ये देखिए यहां पर यहां पर दो रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, सो वी आर एट 65. यहां पर भी दो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, सो वी आर एट 64. ओके. Are we fine up to this? Yes, sir. So what we are doing here is we are looking at the resource utilization at every point. So at this juncture, no resources are getting utilized. At this juncture, your 3000 liters of diesel is getting used, whereas all the 15 vehicles of type B are getting used. Correct? And with that 15 vehicles, I am able to transfer a maximum coal of 65 tons. Similarly, on this side, when I am using all type A vehicles and no type B, that time I am able to transfer a coal of 52 tons and my diesel utilization is less. अब एक चीज देखिए कि यहाँ पर का इसका वो 2 tons कोल ट्रांसफर कर रहा था यूजिंग ओनली 100 liters ऑफ फ्यूल. करेक्ट. सो ऑब्वियसली जब आपके पास में आपने पहले ये पूरा 26 टाइप आपका फ्यूल यूज्ड कम था इसका, तो आपने क्या किया, सबसे पहले सारे टाइप ए व्हीकल्स यूज करने जाओगे. दैट्स लॉजिकल, कॉमन सेंस है ना, क्योंकि उसका फ्यूल यूटिलाइजेशन, फ्यूल माइलेज जो है वो काफी अच्छा है. करेक्ट. कम फ्यूल यूज करता है और 2 टन कोल ट्रांसफर करता है. सो एक तरह से you will prefer type A over type B. Correct? इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर मैं टाइप ए व्हीकल के लिए देखूं फ्यूल यूटिलाइजेशन, सो 2 टन कोल ट्रांसफर कर रहा है यूजिंग 100 लीटर्स. सो 1 टन के लिए कितना लगा? 50 लीटर्स. करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ. वहीं पर इफ आई लुक एट टाइप बी, टाइप बी के लिए कितना लग रहा है 1 टन कोल ट्रांसफर करने के लिए? थ्री टन को ट्रांसफर कर रहा है यूजिंग 66 200 liters fuel. Yeah. 66 liters. 66 liters. So अगर आप इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो टाइप ए व्हीकल वुड बी प्रेफर्ड. करेक्ट. Yes, sir. सो यहाँ पर ये इस तरह का आपका सब एनालिसिस वगैरह जो भी रहता है, दैट बेसिकली हेल्प्स यू अ लॉट. वी विल कम टू दैट. उसको फिर हम कनेक्ट करेंगे शैडो प्राइस क्या होता है. ओके. आर वी ओके अप टू दिस? Yes, sir. ठीक है. सो अभी जस्ट आपको शॉर्ट में मैं आपको जस्ट ये बता देता हूँ कि हाउ वी यूज टू डू इट अर्लियर इन केस ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस. ओके. सो उस केस में ना हम लोग
सारे ये जो कोएफिशिएंट्स होते थे, आप में से कितने लोगों ने ये किया है BMS? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स? Nobody is from BMS? Okay, यश, एक आदमी, बाकी लोग? Only one Yash is from BMS. ओके, सो आपने शायद वो टाइम पर उधर पर सिंप्लेक्स वगैरह करवाया होगा आपको? That was not in a portion, like. अरे वाह, एक्सेलेंट, बच गया भाई तू तो। Yes. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ मी डूइंग इट, आई विल जस्ट शो यू। This is how your simplex actually looks like. क्या मस्त लग रहा है ना? It is nothing but matrices आप लोगों ने पढ़ा है? सर लॉन्ग Yes. बैक अगो। Yes. है ना? तो ये एक्चुअली में मैट्रिसेस मेथड को ही यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। ओके, इफ यू ऑब्जर्व दिस, फाइन, ये देखिए आपने ए और बी का वैल्यूज इधर पर लिखा है। ओके, ये कोएफिशिएंट्स है आपके। यू ऐड स्लैक वेरिएबल्स टू योर इक्वेशंस। अभी आपके ये जितने भी इक्वेशंस हैं उसमें लेस देन और इक्वल टू है। सो माय फर्स्ट इक्वेशन, ओके, S1 वाला जो ये रहेगा 100A plus 200B, since it is less than or equal to, so there is a possibility that it may be slightly lesser than on your RHS value. So हम क्या करते हैं, we introduce a temporary variable which will take up that value. So we will make it as 100A plus 200B plus S1 equals to 4000. ओके, मैं आपको इधर पर दिखाता हूं। ये जो आपके इक्वेशंस हैं, यही सेम इक्वेशंस आपके चेंज हो जाएंगे एंड इट वुड बी, सॉरी, 100A plus 200B plus S1, we call it as a slack variable, equals to 4000. समझे आप? This S1 will be having a value which is the difference of 100A plus 200B and 4000. ठीक है, तो जैसे अभी मैं फर्स्ट ये ले रहा हूं, से मान लो मैंने ये वाला लिया, ये वाला 0 plus 15, 100A plus 15B, okay, 100A plus 200B, so 100 into 0 plus 15 into 200 will give me 3000. तो आपका फ्यूल पूरा यूज नहीं हुआ, so S1 would be equal to 1000 in that particular case. In this particular case S1 will be equal to 600. So वो A और B का जो भी वैल्यू लेगा उसके बाद में जो भी गैप बचता है वो गैप को फिल करने के लिए S1 will work. Are we clear with this concept of S1 slack variable?
Yes, sir. Okay. Similarly, we'll have a plus, अच्छा ये देखो ये ऑटो सजेशन दे रहा है मुझे, a plus b plus s2 will be equal to 30. ठीक है. सेकेंड इक्वेशन के लिए स्लैक वेरिएबल विल बी s2. थर्ड इक्वेशन के लिए स्लैक वेरिएबल विल बी s3. सो a प्लस 0 इंटू बी, क्योंकि b इधर पर नहीं है, ओके, प्लस s3 will be equal to 26. For this one, it is 0 into a plus b plus क्या हो गया इसको, s4 will be equal to 15. Are you able to understand how these slack variables are working? तो जो भी डिफरेंस जो रहेगा उसको वो कंपनसेट करने का काम करेगा. Now if I look at the coefficients of this slack variables, अब actually में if I am introducing this slack variables, it will get introduced in your objective function also. So z will be equals to 2a plus 3b प्लस होगा माइनस होगा, जो भी आप इधर पर स्लैक वेरिएबल्स ऐड करोगे वो सब आपको इधर पर स्लैक वेरिएबल्स को क्या करना होगा, दे विल गेट उनका कोएफिशिएंट्स वुड बी सॉरी 0 into s1. Why 0? जीरो क्यों लेंगे उसको? Because we don't want these to be contributing to our objective function. इसके लिए उसका कोएफिशिएंट्स हम लोग 0 रखेंगे. Are we clear up to this? Any doubts? Yes. So no doubts as of now. So आप क्या करते हो, सारे कोएफिशिएंट्स को आप पहले लिखते हो a, b, s1, s2, s3 एंड s4. सो आप सभी को यहाँ पर लिखोगे एक मिनट. a ये आपके वेरिएबल्स हैं a, b, s1, s2, s3 एंड s4. ठीक है. ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं वो हैं 2, 3, 0, 0, 0, 0. यही सेम चीज मैंने यहां पर डाल के रखा है. कैन यू कनेक्ट विथ इट नाउ? आर यू एबल टू कनेक्ट दिस? Yes, sir. Now look at these coefficients. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का a का कोएफिशिएंट इज 100. Look at this, 100 plus 200, 100, 200, and in the first equation you have s1, but you don't have s2, s3 and s4. इसके लिए तीनों के कोएफिशिएंट्स 0 हो गए and your RHS value is 4000. Fine. फिर s2 में S2 is related to your drivers. So coefficient of A is 1, coefficient of B is 1, S1 is not there, इसके लिए is 0, S2 is there, so this is 1, 0, 0, and your total number of drivers available is 30.
फिर आप ये लेते हो विच इज योर टाइप ए नंबर ऑफ टाइप ए व्हीकल्स, सो ए लेस देन इक्वल टू 26, सो ये 1 हो गया आपका, फिर बाकी का सब 0, बट इन दैट केस यू हैव योर S3 एज अ स्लैक वेरिएबल, सो फॉर दैट यू विल गेट 1. सिमिलरली फॉर S4, तो आपका इधर पर 0 रहेगा, वो यहाँ पर 1 आएगा, बाकी का सब 0 एंड S4 विल बी 1 एंड दिस इज योर RHS वैल्यू विच इज 15. इसके बाद में आप क्या करते हो, यू जस्ट राइट योर स्लैक वेरिएबल्स S1, S2, S3 एंड S4, और इनके सबके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यहाँ पर जो कोएफिशिएंट्स है वही सेम कोएफिशिएंट्स आप यहाँ पर लिखोगे एंड यू विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Z. This Z will be equal to this into this plus this into this plus this into this plus this into this, so which is nothing but sum product. So आप चाहो तो sum product लेकर के कर सकते हो. Clear? And this value of Z, okay, अभी आप पहले उसमें Z निकालोगे. एक सेकेंड, लेट मी, जितना मैंने आपको बोला पहले उतना हम करते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट इक्वेशन जहां पर कि हमारा S1 रह रहा है, ठीक है, S1 के लिए हमारे कोएफिशिएंट्स क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं सो दैट आई एम एबल टू सी एवरीथिंग टुगेदर. सो S1 100, 200 and 1. So here it would be 100, 200, 1. S2, S3, S4 तीनों भी नहीं है, so it is 0. What about your S2? S2 is A plus B, है ना, so 1, 1. This S1 is not there, so S2 is 1. बाकी दोनों 0. ये कोशिश करना जितना समझ में आए, नहीं आया तो मुझे बताइएगा प्लीज. S3 is your this one, so A का coefficient is 1, B is not there, so B का coefficient is 0, S1 is not there, so it is again 0, correct. S2 नहीं है इसमें, S3 है, so it is 1 and S4 is not there, so it is 0, ठीक है. Let us look at S4. S4 मतलब कि आपका B लेस देन और इक्वल टू 15 वाला हो गया, सो A इज नॉट देयर, B इज 1, फिर S1, S2, S3 तीनों नहीं है, सो इट वुड बी 0 एंड S4 इज इक्वल टू 1. इनका सबका RHS वैल्यू क्या है, दिस इज योर डीजल. सो डीजल आपके पास में कितना अवेलेबल है, 4000. Number of drivers, that is 30. Number of type A vehicles 26. Number of type B vehicles 15. यहाँ तक ओके. So what we do is we calculate Z. Okay, तो Z is calculated by आपका इनका सबका coefficients S1, S2, S3 और S4 का coefficient 0 है. So जब हम Z calculate करेंगे, so it would be equal to sum product of this array. Since I am going to use this again and again, I am just going to freeze it, comma this array. So I get 0. Since इधर पर सारे 0 हैं, तो इसमें automatically सब 0 ही आएंगे. Fine. ये सारे सभी का values मेरे को 0 ही मिल रहा है. But what about my Cj minus Zj? Cj minus Zj means ये जो वैल्यूज हैं जो इधर पर जो लिखी हुई हैं, these are your Cj. These are your Cj values. So now Cj, this is your Zj. Cj minus Zj, ये यहाँ पर आपको मालूम पड़ता है कि कौन कौन सा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. फाइन. So Cj minus Zj would be this value minus this value. तो ये आप हर एक के लिए वर्कआउट करोगे. अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जिसका भी Cj माइनस Zj वैल्यू सबसे ज्यादा है, द वन विच कैन कंट्रीब्यूट मोर. ओके, उसको हम देखेंगे. सो एज ऑफ नाउ Cj माइनस Zj
ठीक है, यहाँ पर आपका RHS वैल्यू विच इज ZJ अगर आप कैलकुलेट करो, ओके, फॉर दिस वन ऑल्सो फॉर योर, सो 0 इंटू, एक सेकेंड, हाँ, you will work it out for this also. So यहाँ पर भी it would be, इसको यहाँ तक लेना है. So this becomes your, actually आपको अभी बताता हूँ कि what is the relevance of doing it. Okay, जब हम लोग इसको reduce करेंगे ना, तब आप देखोगे जैसे जैसे हम इसको मैट्रिक्स को reduce करते हैं. So आप देखिए यहाँ पर B को भी हमने कंसिडर किया है, एंड वी आर कंसिडरिंग B to be as 15 vehicles of B are being used, the one which is going to contribute maximum. तो your objective was what? Objective था कि maximum कोल ट्रांसफर करना है, करेक्ट? सो मैक्सिमम कोल ट्रांसफर करने के लिए किसको यूज करना चाहिए? जिसका कैपेसिटी सबसे ज्यादा हो, है ना? हेलो, Yes, sir. सो कैपेसिटी किसका सबसे ज्यादा है? टाइप बी व्हीकल का 3 टन Yes. ट्रांसफर करता है एक बार में. Yes. इसके लिए आप देखिए यहाँ पर B का ही वैल्यू सबसे ज्यादा है, CJ माइनस ZJ, द वन विच विल कंट्रीब्यूट मैक्सिमम, the one which will contribute maximum to your objective should be selected. So अभी क्या होगा, इस मैट्रिक्स में B will enter and either of one variable will leave. The variable which contributes the least will leave. Okay, so उसको भी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? So ये आपको ये मालूम पड़ा कि B आपका एंटर करेगा और इसमें से कोई तो एक लीव करने वाला है. Okay, so उसके लिए we calculate something called as theta. Theta is actually worked out using आपका एक सेकेंड, उसके लिए पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा उसका वैल्यू सबसे कम है. सो आउट ऑफ ऑल द RHS वैल्यू जो हमने इधर पर वर्कआउट किया, उसके लिए पहले हम थीटा वर्कआउट करेंगे. सो थीटा वुड बी जो आपका RHS है और जो आपका एंटरिंग वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट्स. सो यहाँ पर व्हेन आई गो हियर, सो दिस इज माय RHS एंड एंटरिंग वेरिएबल आपका B है, सो दीज आर माय एंटरिंग वेरिएबल कोएफिशिएंट्स यहाँ पर तक का. सो माय थीटा विल बी कैलकुलेटेड, एक मिनट, हाँ, will be calculated based on equals to my RHS divided by my entering variable coefficient, corresponding entering variable coefficient. अभी इसमें ना क्या होता है प्रॉब्लम, when I am just extrapolating it, okay, it gives me an error, divide by 0. Normally जहाँ कहीं पर भी error होता है ना, वहाँ पर we don't compute, okay, जहाँ भी डिवाइड बाय 0 होगा you will not compute. और इसमें जो जहाँ भी आपको थीटा वैल्यू सबसे कम होगी, ओके, that you will select as your leaving variable. So your S4 will leave this matrix and instead of S4 B will enter. So मेरा जो नया जो मैट्रिक्स जो इधर पर वापस से जो बनेगा, ओके, यहाँ पर जो नया मैट्रिक्स बनेगा तो S4 की जगह पर I will have B, और जो ये जो कोएफिशिएंट्स है इनके सबके तो 0 रहेंगे, बट B का कोएफिशिएंट क्या है 3. यहाँ तक ओके है? हम इसको चूज करेंगे. Are we okay up to this? Yes, sir. ज्यादा भारी हो गया क्या? Sir, the coefficient of B3 you took from the CJ minus हाँ, ZJ, हाँ, right? हाँ, बिकॉज ये आपका एक्चुअली ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यूज है.
जिसको हम लेकर के वर्कआउट करते हैं। ठीक है, यहां तक ओके है? Yes. ओके, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, मेरा जो b का जो रहेगा वैल्यू, ओके, ये मेरा एंटरिंग वेरिएबल है, ये मेरा लीविंग वेरिएबल है। सो दोनों का जो पिवट पॉइंट है, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ओके, लेट अस से ये, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस विल बी डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, सब पिवट एलिमेंट से उसको सबको डिवाइड करोगे। ये देखिए, डिवाइड करके यू विल गेट अ न्यू मैट्रिक्स which is, are you able to see this? O6 divided by O6. Look at this. Okay. So So could you just repeat the last step? We have to divide which numbers by 1? ये देखिए, जो आपका पिवट एलिमेंट रहेगा उससे ही आपको इन सब को डिवाइड करना है। सो आई विल शो यू हियर, फ्रेश इसमें करता हूं तो आपको बराबर से समझेगा। सो आई एम गोइंग टू डिवाइड ऑल दिस एलिमेंट बाय this intersecting element, sorry, okay, so if I divide this by 1 it would be 0। अब इसको मैं अगर एक्सट्रापोलेट करता हूं, so it would be 1 upon 1, so 1 रहेगा, 0 upon 1 would be 0, फिर बाकी के भी 0 0 0 1, but what about this 15? 15 upon 1 would be 15, ये भी डिवाइड होगा। यहां तक ओके है? Yes. यार 11:17 हो गया। You have next session also 11:30. No sir. अच्छा, कुछ लोग यस बोल रहे हैं क्योंकि नहीं करना चाहते शायद। ठीक है, सर यस नहीं बोला किसी ने। यस नहीं बोला ना, पक्का? नहीं। तो मैं इसको फटाफट कर लूं क्या थोड़ा सा? इसको कंप्लीट कर दें एटलीस्ट ये मैट्रिक्स। या फिर ठीक है, रहने दो, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। Leave it. हमको एक्चुअली ये एक एक मैट्रिक्स को इसको टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि आपको जब ये B मिल गया ना तो उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द B आपका S1 S2 S3 भी चेंज होता है। ओके, और उसको आप इस तरह से कोशिश करोगे कि इधर पर जो एलिमेंट्स हैं ना, उस एलिमेंट्स के इसमें यहाँ पर में वंस आने चाहिए, बाकी के जीरोज आने चाहिए। सो अगर आप देखिए S1 वाले में 1 है, बाकी में 0 है, S2 वाले में 1 है, बाकी में 0 है, S3 वाले में 1 है, बाकी में 0 है। सो उसके लिए आप क्या रो और कॉलम ऑपरेशंस करोगे सो दैट यू गेट करस्पॉन्डिंगली ones only just in S1, S2 and S3. S4 has already gone out, so we don't need to worry about S4. Okay, so ये ऑपरेशन हम लोग इधर पर करते हैं, S1 माइनस ये वाला B। सो अब ये B को क्या करना है, इधर पर मुझे 1 लाना है, या जो भी इधर पर मेरे पास में ऑलरेडी 1 है तो इधर पर 0 लाना है, 0 लाना है तो इसको मैं
किससे इसको b को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं और इससे सब्ट्रैक्ट करूं ताकि इधर पर 0 आ जाए। सो सबसे आसान तरीका रहेगा कि मैं b में इधर पर 1 है तो 1 को 200 से मल्टीप्लाई करूंगा और इससे माइनस कर दूंगा s1 से। सो मुझे इधर पर 0 मिल जाएगा। दैट्स द रीजन व्हाई इट हैज बीन डन एज s1 माइनस 200b। अब ठीक इसी तरह से ये वाले रो के लिए भी किया है। तो आपका ये रहा, यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, करेक्ट। अब यहाँ पर 1 है ऑलरेडी, यहाँ पर भी मुझे 1 ही चाहिए और b में मेरे को इधर पर वैल्यू 0 है। सो s2 माइनस b, सो ये मेरा s2 हो गया माइनस दिस b विल गिव मी 1। सो 1 माइनस 0 विल गिव मी 1। सो उस तरह से इसको वर्कआउट कर लिया। S3 को हमने एज इट इज ही रहने दिया क्योंकि उसमें सब कुछ बराबर से था। सो वी जस्ट लेफ्ट इट एज इट इज। S3 के ही यहाँ पर 1 था, सो वी लेफ्ट इट एज इट इज। एंड फिर वापस से हम Cj माइनस Zj वर्कआउट करते हैं। तो पहले हम Zj वर्कआउट करेंगे, 0 इंटू दिस, 0 इंटू दिस, सब एडिशन करके टोटल, और फिर Cj माइनस Zj। मैंने यहाँ पर सब कुछ डायरेक्ट वर्कआउट कर दिया था। सो आई कैन नॉट गिव दिस शीट फॉर you to for an explanation. In the next session I will complete this one और वहां पर मैं आपको मैं दूंगा, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. हाँ हाँ चलेगा। We'll stop here only.